Jai Hind everyone. My name is Ashish Dixit. Today I will discuss about the dynamic programming. This subject is running under the AKTU and branch Computer Science and Engineering. So what is the dynamic programming? A dynamic programming is a method for solving a certain kind of problems. And in this technique, we will split a biggest method in some small pieces. Then after the solving these small pieces, we will integrate all small pieces in a one module. Then this solving technique is called a dynamic programming. Okay. So here we will discuss about the dynamic programming. Means we will discuss about the certain kind of the problem in a dynamic programming. Second thing, in a dynamic programming, we can apply it when the solution of the problem includes solution to the subproblems. Third point, a dynamic programming solves each subproblem once and store the result in a table so that it can be rapidly retrieved if needed again. Okay, means all subproblem solution we will store the result in some tables. If we have any kind of requirements related to this data, then we can be retrieved. And last, we will get the solution of the whole problems. Okay. So what is a dynamic programming? A dynamic programming is a meta technique, not an algorithm like a divide and conquer. Okay. When problem break down into the recurring small subproblems. Always kept in mind what is a dynamic programming. In a dynamic programming, we can solve any problem through some small problems, through the sub problems of a particular problems. Means छोटे छोटे पार्ट्स में किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद में उसके होल रिजल्टेंट को इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहलाता है. ओके. Next, properties of the problem that can be solved with the dynamic programming. Simple subproblems. We should be able to break the original problem to small subproblems that have the same structure. Second thing, optimal structure of the problems. The solution to the problem must be a composition of the subproblem solution. And third thing is subproblem overlap. Optimal subproblems to unrelated problems can contain subproblem in a common way. Then these four techniques we will use dynamic programming: simple subproblems, optimal substructure of the problem, and subproblem overlap. Okay. So next, another hypothesis of the dynamic programming may be good for these problems. A dynamic programming is typically applied to optimization problems. What is the optimization? So here we will elaborate what is optimization. Suppose that we will give one examples. You are a shopkeeper and immediate आपको लॉस होता है, और शॉपकीपर को अगर लॉस हो रहा है तो अगर शॉपकीपर को मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, then this is the optimal solution of the minimum loss. अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, then maximum condition is called a optimum solution. Means जब लॉस हो तो मिनिमम से मिनिमम हो और जब प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो. This is called the optimization. Got it? Then these problems may have many possible solutions. Each solution has a value associated with it.
we want a solution with the optimal minimum or maximum values. We can say a solution, not the solution, because there may be more than one solution with the same. It's totally depend on the best value. So here in a dynamic programming, we will solve one techniques. This is called the matrix chain multiplication. So what is a matrix chain multiplication? Here we will not telling about the only matrix multiplication. It's a matrix chain multiplication. Here a large amount of matrices is also given, and which kind of we will solve a multiplication of the all matrix chain. We'll find out the here. Okay, so we will use different types of techniques. How to solve a matrix chain multiplication. Okay, a development of dynamic programming algorithm is also considered under the development of the dynamic programming. Characterize the structure of an optimal solution. First point. Second is recursively define the value of the optimal solution. And third point, compute the value of an optimal solution in a bottom-up fashion. Next thing, construct the optimal solution for the entire problem from the computed value of smaller problems. Okay. These four types of algorithm will be considered here. Our examples here, we have n types of matrix also given, a1 to a1 a2 dot dot an. Okay, we are given a sequencing. Then our next example of the dynamic programming is an algorithm that solves the problems of the matrix chain multiplication. We are given a sequence chain of the matrices. Here we have n matrices. Then we can say that a1 a2 just an to be n matrices to be multiplied with each other, and we wish to compute the product. So a matrix multiplication is associative, so all, and also find the parenthesization is the same product. Means we will find out the solution of the matrix problems and also find out the parenthesization matrix, parenthesized matrix. Okay. Third thing, a product of the matrices is fully parenthesized if it is either a single matrix or the product of the two fully parenthesized matrix product surrounded by the parentheses. Next thing, for examples, if the chain of the matrices is A1, A2, A3, A4, then we can fully parenthesize the product A1, A2, A3, A4 in 5 distinct way. Okay. First way, A1, A2, A3, A4. Then second thing, A1, then A2, A3, and then A4. Third thing, A1, A2, A3, A4. Four things, A1, A2, A3, then A4. Then fifth things, A1, A2, A3, then A4. These are different types of techniques how to multiply. So here, it's a simple way of the matrix multiplication. I think everybody knows about this. If A dot column does not equals to B dot row, means दो मैट्रिक्स हैं और उसमें रो और कॉलम जो है वो सेम नहीं है, तो हमारी जो डायमेंशंस है वो क्या होगी, इनकम्पैटिबल डायमेंशंस होंगी. अगर इक्वल है यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ही पॉसिबल होगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. देन
we can say that let C be a new A row and B column. A row and B सभी जानते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कॉलम टू रो. हम इधर से कॉलम लेते हैं, उधर से रो मल्टीप्लाई करते हैं. देन I is equals to 1 to A dot row. If J equals to 1 to B column, then Cij इनिशियलाइजेशन जो मैट्रिक्स होगा वो होगा इक्वल्स टू 0. स्टार्ट करेंगे. देन K from 1 to A column, then Cij is equals to Cij plus Aik plus Bkj. ये हमारा सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पर. देन लास्ट में हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा. ओके, हियर दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. एक एग्जांपल्स लेते हैं, देन हम उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहां पे एक हियर वी विल डिस्कस अबाउट द simple matrix multiplication. Then again we will take examples matrix multiplication का. Here consider three matrices. These are dimensions: matrix A1, matrix A2 and matrix A3. There are two ways to compute the product: A1, A2, A3. First condition, A1, A2, then A3. Second condition, A1, then A2, A3. Means first multiply क्या करना है हमें, A1 और A2 का, then A3 का. then उसके बाद हमें क्या करना है, A1 का मल्टीप्लाई होगा हमारा A2 मल्टीप्लाई A3. ये टू डिस्टिंक्ट वे है मल्टीप्लाई करने का. तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए A1 A2, जो हमारे पास A1 का जो साइज है वो देखा हमने सबसे पहले 10. देन A2 A3 10 इंटू 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया हमने. देन यहां पर हमने वही किया. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सबसे पहले इसको हमने किया A10 100. देखिए A10 100 ये हमारा पास आया. देन हमारा ये 5 आया, प्लस हमारे पास A10 इंटू 5. देन हमारा 50 आया. इसको लेके इधर कर दिया हमने. जो हमारा सॉल्यूशन आया वो 7500 आया. इसी तरह से हमने A1 A2 A3 का कर लिया. देन हमारा 7500 आ गया. Then here matrix and multiplication problems given a chain A1 A2, that is AN of the matrices, and matrices where matrices AI has size Pi minus 1 cross Pi for fully parenthesized. A product A1 to AN in a way that minimize the number of the scalar multiplication. Then here we use the structure of the optimal parenthesization. Let's AI to J for a product matrix, AI to AI plus 1, then AJ, where I is less than or equals to J. This will be split the product between AK and AK plus 1 for some integers K in the range K is greater than or equals to 1 and less than or equals to n for the sum value of the K. Then for a first compute the matrix A1 to AK and AK plus 1 to n, then multiply them together to produce the final products A1 to n. Next, the cost of this optimal parenthesization is thus the cost of the computing the matrix A1 to K
the cost of the computing matrix AK plus 1 plus cost, the multiplying them together with this. So here we will use the structure of an optimal parenthesization. This is a matrix Mij. Here we will apply the condition if Mi comma j 0 if I is equals to j. And next thing, if minimum of I is less than or equals to k or j, then minimum matrix of Mi comma k plus m k plus 1 comma j plus pi minus 1 comma pk comma pj if I is less than j. Okay, this is a problem finding of the m1 to n. This is the mathematical method. How to construct an optimal solution? Let us define. This is the parenthesization value of k at which we can split the product to obtain an optimal. Parenthesization of the Si comma j is equals to k. So again we will discuss about the matrix and multiplication order. Okay, so first of all we will take an examples, then after examples we will go towards the direction of the algorithm. Okay, so here this is a matrix A1, A2, A3, A4, A5 and A6. Okay, these are dimensions. These are dimensions. Okay, then these are P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Okay, these are we can say that these are dimensions of the A1, A2, A3, A4, A5 and A6. According to matrix, we will draw these matrix plot with 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. One minute. One, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. And always kept in mind, these diagonals will be 0 because here I and k will be same, means Aij and Bij these are same, means जहां पे रो और कॉलम दोनों सेम हो, 1 1 0 2 2 0 3 3 0 4 4 0 5 5 0 एंड 6 6, उन सभी को हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स 2 एंड 1. देन यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, जो हमें फिल करना है वो क्या करना है, वो यहाँ पे होगी. फिर 3 1 और 3 2, ये यहाँ पे से काम करिए, 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 4 5
इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स हमें ड्रॉ करनी है, ये देखिए इतनी, ठीक है। अब हमें इस पे वर्क करना है, इस मैट्रिक्स से वर्क करना होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। इधर की हमने क्या किया, इधर हमने किया जे, इस मैट्रिक्स को लिखा एम आई कॉमा जे, ओके। अब इस साइड से हमने स्टार्ट किया, इधर जे है इधर आई है, हमने लिखा फॉर आई बराबर 1 एंड जे बराबर 2, ये कंडीशन लगाई तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, m1, 2, m1, 2। अब हमें क्या करना है, ये 1 है और ये हमारा 2 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जब 1, 2 पे हमने वैल्यू देखी तो 1, 2 पे हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, इंफिनिटी, वो हमें वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6, हमने इंफिनिटी रख दी। नेक्स्ट चले फॉर के, यहां पे हमने सॉल्यूशन लिया, क्यू की वैल्यू आई, जो हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है वो हमने वैल्यू यहां पे रखी है, एम आई कॉमा के प्लस एम के प्लस 1 कॉमा जे प्लस पी आई माइनस 1 कॉमा पी के कॉमा पी जे, इनकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। ये वैल्यू कहाँ से होगी, वहां पे जो हमने मेंशन किया था पी आई माइनस 1 यानी P0, P1, P2, वो वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको लिया हमने तो हमारी यहाँ एम आई कॉमा के 1, 1, 0 के हमारी वैल्यू यहाँ पर आई, ये भी हमारी क्या हुई वैल्यू 0। देन हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी पी आई माइनस 1, पी के और पी जे की वैल्यू हमने रखी, वो हमारी वैल्यू क्या आ गई 15750। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15750। सेम टू सेम नेक्स्ट प्रोसीजर हमने किया। अब हम यहां पर आ गए, हमने यूज किया वैल्यूज को इसी प्रोसीजर के साथ फॉर आई बराबर 2, हमारे पास आई बराबर 2 के लिए हमने किया, तो 2 के लिए हम कर रहे हैं जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 देन माइनस 1 हमने वैल्यू रखी, हमारे पास 3 आ गया, देन के इक्वल टू 2, m2, 3 के लिए वैल्यू हमने वैल्यू रखी m2, 2, m3, 3, इन दोनों की वैल्यू है अब P1, P2 और P3। सभी को पता है m2, 2, m3, 3 इनकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है, ठीक है, यानी 0 है। तो हमें केवल इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी P1, P2 और P3 की। P1, P2, P3 पे हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जो हमने वैल्यू P-1, P1, P2, P3 की रखी है वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी 2625 वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम इसके लिए निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे और लास्ट में इसके लिए, ठीक, फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या लग रहा है, वो ये देखिए, अगर हमारे पास m2, 5 आ रहा है तो m2, 5 ये देखना है कहाँ जा रहा है, m2, 5 कहाँ पे जा रहा है ये देखना है, m2, 5 यहाँ पर है, यानी हमें ये वाली वैल्यू लेनी है। अगर ये वाली वैल्यू लेनी है तो हमारे पास क्या है, m2, 5 के लिए सबसे पहले m2, 2 लेंगे वैल्यू, m2, 3 लेंगे, m2, 4 लेंगे, ठीक है, फिर m3, 5, 4, 5 इन सब की हमने वैल्यू निकाली। इन सब वैल्यूज में जो भी वैल्यूज मिनिमम होगी वो हम यहाँ पर रखेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 13,000, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 7,125 और इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 11,375। सो वी विल फेच द मिनिमम वैल्यू 7125, ओके, यानी m2, 5 पे हम क्या रखेंगे 7125। तो देखिए यहाँ पे
यहां पे हमने क्या रखा 7125। वेट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और सभी कॉलम फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने टर्न कर दिया, इसको इस तरह से मूव कराया, मूव कराने के बाद हमारे पास क्या जो मैट्रिक्स है इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है, पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स हमने इसी के भी हाथ पे निकाल ली, ठीक है। ये हमारी एल्गो है पैरेंथेसाइज की। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।